Okay, so first read out the sum. Amrit Limited issued a prospectus inviting applications for 20,000 shares at a premium of 2 per shares payable as follows. On application, including premium 5, on allotment 4, and on call 3. Okay, so in the very first line they have explained a lot of things. That means the company wanted to issue 20,000 shares, nothing else. Okay, they have written like this: issued a prospectus inviting application. Those things are not actually kind of immaterial. Okay, because that doesn't carry any such meaning. But the thing is that the company simply wanted to issue the 20,000 shares. That is important. Okay, and they have mentioned the premium is 2 rupees per share, but very carefully see that there is no face value is given. Okay, there is no face value is given. So as a result, what I have to do here, okay, I have to understand from the various figures that what will be the face value. So if we have that the application consists of 5 rupees, okay, and allotment 4 rupees and call 3 rupees. So if I add it, 5 plus 4 9, 9 plus 3, it will be 12. So obviously 12 rupees is the total value, out of which 2 rupees is the premium. So obviously the face value will be 10. Okay, basic calculation, simple one. Okay, so if I'm saying that it is a total of rupees 12, okay, and 2 rupees is the premium, so 10 rupees is the face value. Simple as that. Now applications were received for 30,000 shares. Okay, that is important. That company wanted to issue 20,000 shares, but applications were received for 30,000 shares. So the company is actually received excess application of 10,000. Okay, and pro rata allotment was made on the applications for 20,000 shares. This is also very important. That means is that 24,000 is actually means that that company issued shares to the extent of 24,000, or rather the company adjusted the 4,000 shares money, applications money. ठीक है, 4,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी ने एडजस्ट कर लिया है. ठीक है, अब तुम बोलोगे सर टोटल एक्स्ट्रा था 10,000, उसमें से आप बोल रहे हैं कि 4,000 एडजस्ट हुआ, तो बाकी का 6,000 क्या होगा? ऑब्वियसली दैट 6,000 विल बी रिफंडेड. ओके, दैट 6,000 विल बी रिफंडेड. सो द स्टोरी लाइन कम्स लाइक दिस: application received for 30,000 shares, company made or adjusted the applications for 24,000 shares, or rather you can say that 4,000 shares. 20,000 they are actually have, so that particular thing will be issued, no problem in that. The rest of the 6,000 will be refunded. Okay, so 20,000 is the actual capital, 4,000 is the excess application that is adjusted, or you can say that it's a pro rata, or 6, and the rest of the 6,000 will be simply refunded. So 20,000 plus 4,000 plus 6,000, total 30,000 shares value, or 30,000 shares have been adjusted. Now excess application money paid on application for these shares was utilized towards allotment money. So they have mentioned actually the pro rata words actually saying about this. That means that application money that is been adjusted, or that being the excess is to be that is to be adjusted against allotment. ঠিক আছে, যেটা application money extra হয় সেই অ্যাপ্লিকেশন মানিটাকে কি করা হয়, সেই অ্যাপ্লিকেশন মানিটাকে অ্যাডজাস্ট করা হয়. ঠিক আছে, কার সাথে? অ্যালটমেন্টের সাথে. ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে মেন থিম. Okay, so pro rata, if they have mentioned the word pro rata and they didn't mention this particular line, that excess application money paid on application adjusted against allotment money, so that doesn't that particular line is not at all required. Yes, they have given, fine, very good. Okay, but if the pro rata word is given here, then this particular line doesn't carry any extra significance. Okay, মানে ওটা অটোমেটিক্যালি আমরা ধরেই নিতে পারবো যে ওটা ওটাই হয়. ঠিক আছে, ওকে. নাও Atul, who applied for 600 shares, failed to pay allotment money, and on his subsequent failure to pay the call, his shares were forfeited. Okay, so Atul, who was applied for 600 shares, so Atul 600 shares এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল. দ্যাট মিন্স ফ্রম দ্য কোম্পানি হি ওয়ান্টেড টু হ্যাভ 600 shares. নাও হাউ মেনি shares company is giving to him, that I don't know. Okay, till now I don't know, but I can calculate. Okay, so
अतुल कंपनी के पास से 600 शेयर्स मांगा था। अब कंपनी ने उसको कितना शेयर्स दिया है ये मुझे कैलकुलेट कर लेना है, बिकॉज हम लोग शेयर्स अप्लाइड से सम्स नहीं करते, हम शेयर्स अलॉटेड से सम्स करते हैं। ठीक है, कितना शेयर्स उसको दिया गया है इस बेसिस पे सम्स करते हैं, कितना शेयर्स वो मांगा है मुझके पास से उसका कोई मायने नहीं है। ठीक है, ओके। सो उसके बाद बोला है कि वो अलॉटमेंट मनी भी नहीं दे पाया, कॉल मनी भी नहीं दे पाया, एज ए रिजल्ट उसका शेयर्स फॉरफिट हो गया। बट एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ फॉरफिट तक ही बोला है, फॉरफिट के बाद जो री इशू होता है, ठीक है, री इशू के बारे में कुछ नहीं बोला है। ठीक है, सो जो अगर नहीं बोला है तो हम क्यों करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। सो टू स्टार्ट विथ, ओके, सो द फर्स्ट ऑफ ऑल in the books of Amrit Limited journal entries, okay, so the first journal entry to start with, that is your bank account debit to equity share application account. Now what will be the value here? The value down there, how many shares the company received the application, the company receives the application for 30,000 shares. ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितना आएगा, जितना शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई करेगा उतना ही तो आएगा। ठीक है, सो इट विल बी 30,000 इंटू रुपीज, what is the application money per share? Okay, the application money per shares is actually 5, though it is including premium, but that doesn't that will be done in the next journal entry. For the time being, whoever wants to apply for the shares, okay, he have to pay rupees 5 per share. So bank account debit to equity share application 30,000 into rupees 5. Okay, you can make it 30,000 shares into 5. Okay, এইটা হিসেবে আমি লিখলাম, পরের সাম থেকে আমি লিখবো না। Okay, so the amount will be 1,50,000. Here also it will be 1,50,000. Okay, I already told you I will not write the narration. Okay, so bank account debit to equity share application 1,50,000, 1,50,000. First journal entry is over. Now come to second one, equity share application account debit okay. Now just see that here equity share application is credited by how much, credited by 1,50,000, so that will to be posted down there. Okay, that means this account will be credited, sorry, debited here. আগে ক্রেডিট করা হয়েছিল, এখন ডেবিট করলাম। নেক্সট, টু ইকুইটি শেয়ার capital, keep one thing in mind, in capital there must be always the number of shares to be issued by the company. ঠিক আছে, কোম্পানি কতগুলো শেয়ার ইস্যু করতে চাইবে সেইটাই কিন্তু कैपिटल जाए। ठीक है, कैपिटल में उससे ज़्यादा नहीं जाता है, आई कम जा सकता है, बिकॉज अगर एप्लीकेशन कम मिलेगा तो उसके बेसिस पे सम्स करना पड़ेगा। बट अगर एप्लीकेशन तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, जितना शेयर्स कंपनी इशू करना चाहता है, ठीक है, दैट मीन नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ओके, उसका अमाउंट सिर्फ कैपिटल में जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। ओके, सो यहाँ पर कंपनी कितना शेयर्स इशू करना चाहता है, एकदम फर्स्ट लाइन में बोल दिया, इट विल बी 20,000 शेयर्स। ओके, सो इट विल बी 20,000 into rupees 20,000 शेयर्स इंटू रुपीज़। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर 5 रुपया टोटल था, 2 रुपया तुम्हारा प्रीमियम था, सो कैपिटल के लिए कितना था, 3 रुपया। ठीक है, তাহলে আমার 2 টাকা ছিল হচ্ছে প্রিমিয়াম, 5 টাকা টোটাল, 2 টাকা প্রিমিয়াম, 3 টাকা ক্যাপিটাল। ঠিক আছে, ব্যাস এইভাবে জাস্ট নর্মাল। ঠিক আছে, সো 20,000 into 3, so it will be 60,000. Next, to
securities premium account. Okay, so it will be 20,000 into रुपीज़ 2. प्रीमियम कितना बोल दिया था? प्रीमियम बोल दिया था 2 रुपया करके, ठीक है. सो 20,000 इंटू 2, दैट मीन्स इट विल बी 40,000. ओके, नेक्स्ट दे हैव मेंशन सम शेयर्स हैव बीन रिफंडेड. हम पहले ही बोल दिया था टोटल 30,000 मिला था, ठीक है, बट उसमें से 20,000 कंपनी ने शेयर इशू किया, 4,000 का अमाउंट एडजस्ट कर लिया, दैट मीन्स प्रोराटा कर लिया, और 6,000 का रिफंड कर लिया. तो पहले वाला रिफंड वाला एडजस्ट कर लेते हैं. बैंक अकाउंट, it will be 6,000 into rupees 5. ओके, बिकॉज जो लोग एप्लीकेशन दे रहा है वो एप्लीकेशन में कितना पैसा देगा? 5 रुपया करके ही देगा. सो जब हम लोग वापस करेंगे 5 रुपये में वापस करेंगे, ठीक है. ऐसा तो नहीं कुछ पैसा लेके रख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. जिन लोगों को तुम रिफंड कर रहे हो, ठीक है, उसको पूरा पैसा वापस करना चाहिए, ठीक है. सो 6,000 इंटू 5, सो इट विल बी 30,000. And rest of the amount that is to be adjusted against allotment, or rather you can say that it is a pro rata, ठीक है. So to equity share allotment account, it will be your 4,000 into rupees 5. Okay, so it will be 20,000. Now if you carefully see this, okay, 60 plus 40 1 lakh, 1 lakh plus 30 1 lakh 30 plus 20 1 lakh 50. So 1 lakh 50 and 1 lakh 50 matched here, but the journal is very much lengthy one because you have lot of things to deal with. Okay, that means that 1 lakh 50,000, for 20,000 shares it is to be transferred to capital at the rate rupees 3. For 20,000 shares it is to be transferred to the extent of rupees 2 to the securities premium. Okay, 6,000 shares money will be refunded at the rate rupees 5, that means to bank, and rest of the 4,000 is to be adjusted against the allotment. So to equity share allotment, 4,000 into 5, 20,000. So this is your the journal entries. Now in some students generally some students may do this separately. Okay, you can do it, okay, no problem in that, but what I feel, why to segregate this particular journal entry into 2 or 3 parts? Okay, you have to write the journal entry 3 or 2 to 3 extra journal entries. Okay, so it is better to solve it here. Okay, এখানেই করে নে better হবে. Now after doing this, okay, I will calculate some value. Okay, now what is that value? Okay, I'm just showing here. You can do it in the workings, or you can do it in the okay, you can do this in your particulars, or rather you can do this in the workings. Okay, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम कर सकते हो, बट इसको यहाँ पर करने से कोई गलती नहीं होता है, ठीक है. सो आई एम डूइंग दिस. ओके, सो दिस वन विल बी योर per share adjustment is equals to, I have a formula. Okay, what is that formula? Just a minute. Okay, it should be excess application adjusted against allotment divided by number of shares issued. Okay, excess application adjusted against allotment into number of shares issued. Okay, so in the next line I'll put the value here. Now look at here, what is the excess application money you have to adjust. Okay, इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा पैसा
शेयर होल्डर्स ने दे दिया, हम उसका पैसा अपने पास रख दिए, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, बाद में उसको एडजस्ट करेंगे। सो पर शेयर बेसिस पे उसका अमाउंट कितना होता है। सो एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, इट इज नथिंग बट दैट दिस पर्टिकुलर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जितना अमाउंट है, ठीक है, এই ইকুইটি শেয়ার অ্যালটমেন্টে যে অ্যামাউন্টটা দেওয়া আছে সেটাই, ঠিক আছে। এক্সেস অ্যাপ্লিকেশন অ্যাডজাস্টেড এগেইনস্ট অ্যালটমেন্টের মানেটা কি, এই যে ইকুইটি শেয়ার অ্যালটমেন্ট বলে যে অ্যামাউন্ট যেটা লিখেছিস, ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে তোর প্রো ডাটা বা এক্সেস অ্যাপ্লিকেশন যেটা থাকে সেইটা, ঠিক আছে। সো দ্যাট পার্টিকুলার 20,000 ইজ টু বি পোস্টেড অ্যাজ দ্য এক্সেস অ্যাপ্লিকেশন মানি অ্যাডজাস্টেড এগেইনস্ট অ্যালটমেন্ট। সো আই এম রাইটিং হিয়ার 20,000 divided by what is your number of shares to be issued. The number of shares to be issued, they have mentioned that in the very beginning of the question the company wanted to issue 20,000 shares, so it will be again 20,000. So obviously it will be is equals to, I will write rupee 1 per share, okay, rupee 1 per share. Now you'll ask me, sir, what is the meaning of that? Okay, what this 1 rupee suggests, okay, because that is very important, okay, you need to understand what is the significance of this 1 rupees. That 1 rupee suggests that you have took 1 rupee per share excess from the shareholder, that is to be adjusted later on, okay। আমি 1 টাকা করে বেশি ওদের কাছ থেকে নিয়ে রেখেছি, আমরা পরে ওই 1 টাকাটাকে অ্যাডজাস্ট করে দেবো, বা পরে সিম্পলি 1 টাকা কম নেব। मैंने उस लोगों के पास से, मतलब शेयर होल्डर लोगों के पास से 1 रुपया पर शेयर ज़्यादा ले लिया था। अब जब टाइम आएगा, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे हम लोग 1 रुपया करके, ठीक है, अमाउंट जो है, ठीक है, 1 रुपया करके जो अमाउंट एक्स्ट्रा ले लिए थे उसको बाद में एडजस्ट कर देंगे या 1 रुपया करके कम लेंगे। दैट इज़ द सिंपल थिंग, ठीक है। 1 रुपया ज़्यादा ले लिए थे, 1 रुपया कम लेंगे। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पर शेयर एडजस्टमेंट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज in case of the pro rata you can't do any sum without having this, ঠিক আছে। এই জিনিসটা না বার করলে কিন্তু কোনো pro rata sum করা যায় না, ঠিক আছে। so this is very important down there, okay। so your per share adjustment is coming as 1 per share, okay, done। now come to the नेक्स्ट जर्नल एंट्री, ओके। सो एप्लीकेशन का जितना जो भी दो ऐप मैंने पहले ही बोल दिया था, यहाँ पर हर एक स्टेप्स के लिए 2-2 जर्नल एंट्रीज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए 2, अलॉटमेंट के लिए 2, कॉल के लिए 2, लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पर एप्लीकेशंस वाला हो गया। नाउ वी कमिंग टू द अलॉटमेंट, ओके। नेक्स्ट वन, इक्विटी शेयर allotment account debit, okay। how many shares are there? 20,000 shares into what is your allotment money per share? allotment में 4 रुपया था, कोई distinction नहीं था, only ₹4, okay। so it will be ₹4, so 20,000 into ₹4, so it will be coming as 80,000 to equity share capital, okay। so it is coming as 80,000 also, okay। so equity share allotment to equity share capital 80,000. now here this part of adjustment, this part of understanding is necessary, okay। what I am saying that in allotment the 4 rupees is due, okay। so in other words I can say that from the shareholder I will take 4 rupees, okay। আমি shareholder দের কাছ থেকে 4 টাকা নেব, ठीक है। मुझे shareholder के पास से 4 रुपया 4 रुपया करके लेना है, बट एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, मैंने पहले से 1 रुपया करके ले लिया है, ठीक है। अलॉटमेंट के लिए 4 रुपया लेना है, बट पहले से अगर हम लोग 1 रुपया करके लेके रखेंगे सो बाद में कितना लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली 3 रुपीज विल बी ड्यू, ठीक है। 4 रुपया लेना था, 1 रुपया पहले से ही ले लिए, तो अभी कितना लेना है, अभी 3 रुपया लेना है नॉर्मल, ठीक है। सो नेक्स्ट जो एंट्री है, ओके, उसमें हम लोग ये वाला चीज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे, ओके। सो द नेक्स्ट वन, बैंक अकाउंट डेबिट,
allotment in arrear account debit to equity share allotment account. Okay, bank account debit, allotment in arrear account debit to equity share allotment account. Now very carefully see this. What is the amount normally due from the allotment? Normally the amount due is 80,000, but out of which you have already received this 20,000. ये 20,000 पहले से मुझे मिल चुका है, ठीक है. सो हम लोग यहाँ पर कितना बैठाएंगे? दिस 20,000. Okay, so the amount is coming as 80,000 minus 20,000. Okay, so it will be 60,000. नाउ कमिंग टू अलॉटमेंट इन एरियर. अब ये इतना इजी नहीं है, ठीक है. क्यों इजी नहीं है? बिकॉज यहाँ पर क्या बोला है, Atul who applied for 600 shares failed to pay allotment money and the call penny. Okay, so अतुल ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. सो हम उसको कितना शेयर्स दिए? ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज अगर तुम 600 शेयर्स के ऊपर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज 600 शेयर्स वो मांगा था, बट उसको कितना शेयर्स हम दिए ये नहीं बताया, ঠিক আছে. 600 শেয়ার চেয়েছিল আমার কাছ থেকে, ফাইন, কিন্তু আমি কতকে দিয়েছি বা কোম্পানি কতকে ইস্যু করেছে বা অ্যালট করেছে সেটা কিন্তু আমরা পাইনি এখনো, ঠিক আছে. সো আই নিড টু মেক আ ওয়ার্কিংস টু ফাইন্ড আউট দ্যাট পার্টিকুলার নাম্বার অফ শেয়ার্স অ্যালটেড, আদারওয়াইজ আই কান্ট ডু দ্য সামস. সো আই হ্যাভ টু go for the workings. Okay, so in working notes I am writing this like for 24,000 shares applied, 20,000 shares allotted. Okay, simple unitary method. Okay, for 24,000 shares applied, okay, 20,000 shares allotted. Okay, next simple same process. Okay, for 1 shares what will be the number of shares allotted? Again the same simple unitary method. 24,000 के लिए 20,000, so एक के लिए कितना होगा? Obviously divided by that, so it will be 20,000 divided by 24,000. Now if I'm asking what is for the 600 shares applied, because Atul 600 shares के लिए apply किया था. Okay, so for 600 shares applied it will be 20,000 divided by 24,000. This is to be multiplied by 600. सिंपल यूनिटरी मेथड. ओके, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, नॉर्मल यूनिटरी मेथड में इसको कैलकुलेट किए, ठीक है. 24,000 के लिए 20,000 अलॉट किया गया, एक के लिए कितना होगा? 20,000 डिवाइडेड बाई 24,000, और 600 के लिए कितना होगा? सो योर आंसर इज कमिंग एज 500 शेयर्स. ओके, सो आई विल राइट दिस लाइक 500 शेयर्स allotted. Okay, 500 shares allotted. So this is your working note. So for Atul, okay, you have to account for 500 shares. So जब वो फेल करेगा, मतलब जब पैसा नहीं दे पाएगा, तो कितना शेयर्स के लिए पैसा नहीं दे पाएगा? तो वो 500 शेयर्स के लिए पैसा नहीं दे पाए, ठीक है. तो उस बेसिस पे हम लोग अगर एडजस्टमेंट कर लेंगे, वेरी केयरफुली सी दिस, वी हैव 500 शेयर्स इनटू व्हाट इज द अलॉटमेंट मनी पर शेयर. अलॉटमेंट में नॉर्मली 4 रुपया करके रहता है, ठीक है. नॉर्मली अलॉटमेंट में 4 रुपया करके रहता है, ठीक है. हम मान लेते हैं 4 रुपया करके रहता है, बट उसमें से मेरे पास ऑलरेडी शेयर होल्डर लोगों ने ऑलरेडी मेरे पास 1 रुपया करके दे दिया है, ठीक है. सो 4 টাকা ছিল আমার, ঠিক আছে, 4 টাকা ছিল, তার মধ্যে আমি অলরেডি 1 টাকা পেয়ে গেছি, তাহলে এখন বাকি পড়ে থাকে কত? দ্য 3 রুপিস ইজ রিমেনিং. ওকে, সো ইট উইল বি 4 minus 1 3 3 into 500, so the amount is coming as 1500.
500. So what will be the amount you will receive? You will receive the remaining portion, that is 58,400. You can write this as balancing figure. Okay, you can write this as balancing figure. Okay, so this is the actual treatment, or rather this is the basic treatment of the प्रोराटा अलॉटमेंट. ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट में ऐसा ही होता है. ठीक है, तुम पहले से कुछ अमाउंट रिसीव करके रखोगे. ठीक है, बाद में जब पैसा मिलने का टाइम आएगा, ठीक है, तुम उसके पास से कम पैसा लोगे. ठीक है, अब जो नहीं दे पाएगा वो ऑब्वियसली कम पैसा ही नहीं दे पाएगा, बिकॉज पहले से उसके पास से हम लोग पैसा रिसीव कर चुके थे 1 रुपया करके. ठीक है, तो 4 रुपया ड्यू था, 1 रुपया पहले से मिल चुका है. ठीक है, सो अभी कितना मिलेगा? 3 रुपया. अब 3 रुपया अगर कोई नहीं पे कर पाएगा, सो ऑब्वियसली इट विल बी 500 into 3, so it will be 1500. So this is your pro rata allotment. Now coming to the call. Okay, एक बार pro rata का मतलब allotment खत्म हो जाता है ना, normally the sums become quite easy. ठीक है, because इसके बाद और कोई tricky जगह नहीं होता है, normal हो जाता है. ठीक है, so equity share first and final call account debit. Why I am writing first and final call? Because there is only one call. ठीक है, एक ही कॉल है. ठीक है, 2 कॉल नहीं है, तो 2 कॉल अगर रहता तो हम अलग अलग करके लिखते, बट यहाँ पर एक ही कॉल है. सो आई एम राइटिंग देयर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. What is the amount? Obviously I have said it will be 20,000 into, okay, the is 3 rupees per share. ये 3 रुपया करके था. Okay, so it will be coming as 60,000 to equity share capital account. It is also 60,000. Okay, so equity share first and final call account debit 60,000 to equity share capital 60,000. Now coming to the receiving of the first and final call money, so the journal entry will be bank account debit. There will be some calls in arrear because Atul also failed to pay the call money, and if it is a normal rule, if he fails to pay the allotment money, then obviously he will also unable to pay the call money too. Okay, so calls in arrear account debit to equity share first and final call account. Okay, so in equity share first and final call we have to put that particular 60,000. এই 60,000 টা এখানে এসে ক্রেডিট হবে. Now what is the calls in arrear? In calls in arrear you need to calculate. Okay, the you know that there is the 500 shares have been allotted to Atul. Okay, 500 shares into what is the call money? The call money is rupees 3. Okay, so it will be also 1500, and the bank again the same thing, it will be your balancing figure. And you knew the amount, it will be 58,500. Okay, so this is like basically the journal entries regarding the issue of the shares. Okay, these are the journal entries regarding the issue of the shares. Issue of shares এর এই journal entry গুলো রয়েছে. ঠিক আছে, for issue of shares I have to pass these journal entries only. Okay, now in this particular sums we have that one call, so that is the end of the issue. Now what is the remaining one? That is, they have said that the company have decided to forfeit the shares of the Atul. Okay, Atul का जितना shares है उसको मुझे forfeit करना है. ठीक है, so forfeiture का journal entry होता है equity share capital account debit this is very important step. Now how many shares you are forfeiting? Obviously 500 shares, no problem in that. Now the question arises, what will be the value? Okay, that means it is to be multiplied by which amount? Okay, it is to be multiplied by the capital you have already credited.
ওকে, যতবার আমি ক্যাপিটাল ক্রেডিট করেছি সেইটা টোটালটা, ঠিক আছে, बिकॉज वी आर कैंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरफीचर, द मीनिंग ऑफ द फॉरफीचर इज एक्चुअली द कैंसलिंग आउट द शेयर्स। ओके, सो मैंने जब इशू किया था हर एक बार कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब जब कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब मैंने कितना बार कैपिटल क्रेडिट किया दिखाते हैं, ठीक है, देखो, look at here, here secured equity share capital how much, 3 rupees, here also equity share capital how much, 4 rupees, because both the amount are same, here also 3 rupees, so what will be the total, here 3, this is 4 and this is 3, so 3 plus 4 plus 3 it will be 10। okay, so it is to be 10 रुपीज़। ओके, और एक इजी प्रोसेस है, ठीक है, इजी प्रोसेस है, जब तुम फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करोगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक ही कॉल था फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है, अगर फाइनल कॉल के बाद तुम अगर फॉरफिट करोगे देन सिंपली मल्टीप्लाइड विद द फेस वैल्यू। ओके, जब फाइनल कॉल के बाद अगर तुम फॉरफिट करोगे जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद द फेस वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपीज़ करके, जस्ट मल्टीप्लाइड विद द फेस वैल्यू। okay, now so equity share capital debit 5000। next question that I have written that I have given in the format that securities premium can be debited, okay, but there is a condition, the condition is if the securities premium is unpaid, okay, then the securities premium will be debited। okay, अगर securities premium unpaid है तब securities premium debited होगा, but यहाँ पर एप्लीकेशन में प्रीमियम का पैसा था और एप्लीकेशन का पैसा सबने भरा था, बिकॉज एप्लीकेशन का पैसा अगर नहीं देगा तो अप्लाई कैसे करेगा, ठीक है, सो एप्लीकेशन का जो पैसा था वो सभी ने दिया है, ठीक है, सो एज ए रिजल्ट प्रीमियम का पैसा भी सभी ने दिया है, सो प्रीमियम इज अनपेड नहीं है, प्रीमियम इज नॉट अनपेड, प्रीमियम इज पेड। okay, as I have received that in terms in at the time of the application money which have been paid by all। ओके, सो सभी ने एप्लीकेशन मनी दिया है, एप्लीकेशन के अंदर तुम्हारा प्रीमियम का भी अमाउंट था वो भी दिया है, ठीक है, सो कोई भी प्रीमियम का अमाउंट ड्यू नहीं है और नथिंग एज प्रीमियम ऑफ अनपेड। ओके, अनपेड प्रीमियम बोल के कुछ नहीं है, सो एज ए रिजल्ट देयर इज नो नीड टू डेबिट दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर प्रीमियम अनपेड होता तो डेबिट करते हैं। नेक्स्ट, टू allotment in arrear। to allotment in arrear account। okay, so in allotment in arrear just look at here, what is the allotment in arrear, it is 1500। next, to calls in arrear। okay, calls in arrear कितना है, calls in arrear is also 1500। the rest of the amount is to be transferred to share forfeiture account। okay, it will be your balancing figure। ये बैलेंसिंग फिगर करके निकल सकता है और भी एक तरीका है, बता दे रहा है, सो ऑब्वियसली इट इज 3000, सो द रिमेनिंग अमाउंट विल बी योर 2000, so your balancing figure is came as 2000। now how can you be sure about that particular 2000? this share forfeiture is actually refers that how much amount you have received from the shareholder which you are not refunding because of the forfeiture। forfeiture में हम लोग क्या करते हैं, उसका जो शेयर्स का ओनरशिप है उसको ले लेते हैं, बट उसके बदले में हम कोई पैसा वापस नहीं करते, ठीक है, सो जो भी पैसा उस शेयर होल्डर के पास से मिला है दैट विल बी माई प्रॉफिट। ঠিক আছে, যে অ্যামাউন্টটা আমি ওর কাছ থেকে পেয়েছিলাম সেটা আমার লাভ। সিম্পল ব্যাপার হচ্ছে আমি যে পয়সাটা ঝেপে দিলাম, ठीक है, सिंपल, ठीक है, जो पैसा हम लोग खा दिए, ठीक है, उसके बदले में उसको शेयर नहीं दिया, मेरे पॉकेट में चला गया, ठीक है, सो दैट विल बी योर प्रॉफिट। ओके, सो उसके पास से कितना पैसा मिला है, ठीक है, एक शेयर होल्डर के पास से कितना पैसा मिला है, ध्यान से देखना, वो एप्लीकेशन का कैपिटल का पैसा दिया है, हम प्रीमियम का बात नहीं कर रहे हैं, प्रीमियम इज अ सेपरेट थिंग, प्रीमियम को छोड़ो, प्रीमियम का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर नहीं करते, ठीक है, इसीलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है इफ इट इज अनपेड। ओके, सो 3 रुपया कैपिटल के लिए दिया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और 1 रुपया प्रोरेटा के हिसाब से दिया था, ठीक है, सो 3 रुपया दिया था एप्लीकेशंस में
for capital portion only. Again I am just saying that only capital portion will be considered, no securities premium will be considered. Okay, so capital portion के लिए वो कितना दिया, 3 रुपीज़, एंड प्रोराटा के हिसाब से ज़्यादा कितना दे दिया था, पहले से 1 रुपया करके दे दिया था. सो उसके पास कोई भी एक शेयर होल्डर, मतलब अतुल के पास से कितना पैसा ज़्यादा लिया था, 3 रुपया एप्लीकेशन का, 1 रुपया प्रोराटा का. सो टोटल मिला के कितना होता है, 4 रुपया. ठीक है, अब तुम अगर चाहो तो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो like this, or 500 shares into, okay, it will be rupees, okay, rupees 3 plus rupee 1. रुपीज़ 3 एप्लीकेशंस के लिए है और रुपीज़ 3 तुम्हारा प्रोडाटा के लिए है. ओके, इफ़ यू वांट टू डू दिस यू कैन डू इट लाइक दिस. ओके, तुम चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो इफ़ यू वांट. ओके, बट आई डोंट से दैट, मैंने मुझे नहीं लगता इसको ऐसे करने के लिए. ठीक है, बिकॉज बैलेंसिंग फिगर से काम हो जाता है. ठीक है, बेकार का कैसे करके क्या फ़ायदा. ठीक है, बैलेंसिंग, सिंपल बैलेंसिंग फिगर से ये हो जाता है, इतना कुछ झमेला करके कुछ नहीं हो लगेगा, बाद में लगेगा, जो सम में लगेगा उस सम में करेंगे. ठीक है, बट इस सम्स के लिए इट्स सिंपल बैलेंसिंग फिगर विल बी नेसेसरी. ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ टूडेज सम. ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताओ. স্যার ওই যে ডিউ ছিল 5-600, হ্যাঁ, তো ওটা অ্যাপ্লিকেন্ট থাকলেই মানে শুধু ওটা মানে ক্যালকুলেশন করে 500 আসবে, একদম একদম রাইট. না হলে 600ই আসবে. একদম, যদি এখানে লেখা থাকতো সাপোজ এই যে লাইনটা দেখছিস, অতুল হু অ্যাপ্লাইড ফর 600 শেয়ার্স, এই কথাটার জন্য আমরা কনভার্ট করলাম. যদি এখানে বলা থাকতো অতুল হু হোল্ডিং 600 শেয়ার্স, তাহলে আমি কিছু করতাম না, কারণ ওর কাছে 600 শেয়ারই আছে. ঠিক আছে, কথাটা যদি এরকম থাকতো অতুল হোল্ডিং 600 শেয়ার্স, তার মানে ওর কাছে 600 শেয়ার্সই আছে, তাহলে আমার ক্যালকুলেশন করার কোনো দরকার নেই. ঠিক আছে, এই যে অ্যাপ্লাইড কথাটা লিখে দিল, তার মানে ডিভিশন, মানে দুটো ডাইলেমা তৈরি হচ্ছে, অ্যাপ্লাইড কি আর অ্যালোটেড কি. ঠিক আছে, তো সেই জন্য আমাদের কনভার্ট করতে হলো. ওকে, এনি আদার কোয়েশ্চেন?